Okay, so in the previous lecture we have completed continuity part, and Angelina, you were absent in that class, so I'm not going to repeat the topics that we have revised, and I hope you know all the concepts and the question related to the continuity part, right? वैसे मैं 5 मिनट में समझा देता हूँ. कुछ ज्यादा ही पीछे चला गया क्या? See, in continuity, the main thing is that your LHL is should be equals to RHL, and that should be equals to the function value at that particular x, है ना? अगर आपका continuity होना चाहिए, if you want any function to be continuous at any particular point, so your LHL must be equal to RHL, and that should be equals to the function value. Here it is, right? LHL should be equals to RHL, and that should be equals to function value at particular x. LHL means you are approaching your this point, x is equals to a from left hand side. This is LHL, and this point from right side is your RHL. ठीक है? LHL and RHL में जो ये लिमिट होती है x टेंडिंग टू माइनस a नेगेटिव, इट इज नॉट अ माइनस ऑफ a, है ना? ये बस रिप्रेजेंट करता है कि आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो, एंड दिस a पॉजिटिव मीन्स यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड. और ये एफ ए की वैल्यू मतलब एग्जैक्टली ए के ऊपर आपका कितनी वैल्यू है, दैट्स इट. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है? लाइक हियर RHL, LHL, and function value, they all are not equal. Therefore, this function is discontinuous at x is equals to 4, because we are checking at x equals to 4. हम x के अराउंड चेक कर रहे थे. On the we are checking on the left hand side of x and on the right hand side of x and on the x is equals to 4. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे, एंड यहाँ तक हमने किया था इन द प्रीवियस क्लास. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिफरेंशिएबिलिटी. उसको कुछ हो गया लग रहा है. ओके, सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो हमने क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड, जो कॉन्सेप्ट किया था उससे रिलेटेड. ओके, डू यू नो अबाउट सिग्नम फंक्शन? एनीवन, डू यू नो अबाउट सिग्नम फंक्शन? ये जब मैं चैप्टर करा रहा था तब भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? नहीं पता. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? एनीवन, किसी को पता हो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? किसी को नहीं पता? एनीवन, अंजलिना आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर? Round down a number to the nearest integer. Okay. So if I put minus 2.5 in greatest integer, so what will be its value? -3. Minus 3, okay.
-3. Okay, Ali. Okay, so just do this question and tell me the points of discontinuity. Find all the point of discontinuity where f is defined by this. Answer. Is it done? क्या हुआ? Is it done? Yes, sir. Okay, so tell me the points of discontinuity. Point of discontinuity 1. Is 1. Okay. बाकियों का आ गया? Shamwan and Ali, have you got the answer? Yes. Shamwan, आपका? Okay. Okay, so I hope the continuity part is done. ठीक है. अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि जितने भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, try to solve each and every question regarding this continuity, because we are doing revision. So better रहेगा कि आप घर से वो ऑलरेडी करके आए. सारे तो नहीं कर पाएंगे, इतना मुझे पता है, बट जितने भी हो पाए. सो दैट इज योर होमवर्क पार्ट. ओके. सारे एक दिन में नहीं होंगे, पर चार पर 2-3 दिन में हो जाएंगे. सो लेट्स कम टू द डिफरेंशियबिलिटी. सो आपको डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक्स आपको पता ही होगा ना. इसको ऐसे लिखते हैं, लाइक इट इज लाइक लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0
f of c plus h minus f of c plus h minus f of c over h. और instead of c you can replace it by x also, है ना. जनरली हम ऐसे भी x से भी लिखते हैं, h tending to 0, and f of x plus h minus f of sorry x over h, and this is known as फर्स्ट फॉर्म. इसको फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. ओके, फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं. एक मिनट. टेल मी एनीवन, इज इट फर्स्ट फॉर्म? किसी को पता है? नहीं. ओह, चलिए खैर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा फॉर्म है ये. द मेन थिंग इज यू मस्ट नो द फॉर्मूला, एंड आई थिंक दिस इज नोन एज द फर्स्ट फॉर्म. ओके. So let's start with the main part of your derivative, that is these rules and some important formulas, some direct formulas. So this is the algebra of derivative, है ना. डेरिवेटिव को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट डेरिवेटिव बाय दिस और बाय dy बाय dx और बाय y डैश. ओके, we represent like this. So here we have u plus v function, u plus minus v, and we have whole derivative. We have derivative on whole v, u plus v. So we can do like u derivative plus minus v derivative. We can do like this. Okay, this is algebra, and this is known as a product rule, and this is important. Product rule says that u into v derivative is equals to u derivative into v plus u derivative into सॉरी u बाहर आ गया and v का डेरिवेटिव. ये समझ आया? Is it clear? Yes, sir. So this is known as product rule, right? मान लीजिए आपके पास एक x फंक्शन है और एक मान लीजिए x स्क्वायर है, और यहाँ पे एक एनी कांस्टेंट 4. सो x स्क्वायर को मैं बाहर निकालूंगा, 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4 को बाहर निकालूंगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो इसका आंसर आएगा 8x. ठीक है. सो ये प्रोडक्ट रूल होता है. सो दिस इज माय प्रोडक्ट रूल, एंड इट इज आल्सो नोन एज अ लेबनिज रूल, बट इसको हम प्रोडक्ट रूल से जानते हैं. एंड दिस इज कोशेंट रूल. कोशेंट रूल में डेरिवेटिव वाला होता है. इसको कैसे याद रखना है? u ओवर v का डेरिवेटिव होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डिनोमिनेटर v स्क्वायर. नाउ यू हैव टू यू हैव रिटन v स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, तो v को आप बाहर ले लोगे, एंड u का डेरिवेटिव माइनस u को बाहर लोगे एंड v का डेरिवेटिव. ओके, लाइक इफ आई हैव 4 बाय एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव होगा v. व्हाट इज v? v is x square. Okay, instead of x square just write x for the simplicity. X square. Now removing x, 4 का डेरिवेटिव 0 minus u is 4, 4 removed out, and the derivative of x is 1. So this is minus 4 by x square.
So derivative of 4 by x is this. Or if you know the things directly, so you can just remove 4 outside as it is constant, and you can just derivate dy dx 1 over x, एंड 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x², अगर आपको डायरेक्टली याद है तो। ओके, so this is the derivative, and derivative using the quotient rule. Okay, and this is my product rule and Leibniz rule. Now we have some important formulas, like derivative of x power n is n x power n minus 1, n यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगा और पावर में एक पावर कम हो जाएगा। एंड साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन होता है, टेन का सीकन स्क्वायर एक्स होता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। Okay, one more thing, that uh, this is a this is theorem, and it is given in your book also. Like if a function f is differentiable at point c, then it is also continuous at that point. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आपका कोई फंक्शन है, वो अगर डिफरेंशिएबल है किसी फंक्शन किसी पॉइंट पे, let's say at any point p, okay, so that function is must be continuous. It is continuous at that point p, but vice versa is not correct. ठीक है, every differentiable function is continuous, okay, but every continuous function is not differentiable. ये चीज याद रखना, but every differentiable function is continuous. ये कहीं नहीं पूछी जाएगी आपसे, मैं आपको मेन सीधे मुद्दे पे लेके आता हूँ, आपको जो करना है, जो जिससे क्वेश्चन आएगा। Okay, now the derivative of composite function. Composite function का derivative. What do you mean by the composite function? So in this we have function like, let's say you have this function. इसमें function की value है 2x plus 1. Let's say power is 4. So this is a composite function. Okay, this is a composite function, and you have to find the derivative of this function. So how you will do this? Simply you have to use that x power n rule. x power n का डेरिवेटिव होता है n x n minus 1. Okay, so you have to use this, and you have to use chain rule also. So I hope you know what is a chain rule. So its derivative is, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 4 टाइम्स 2x plus 1 3. Is it correct? Is it correct? Tell me, is it correct? कुछ इश्यू है क्या? Am I audible? Yes, sir, into 2. Into 2. Ali, is it correct or not? My internet is lagging. Shaman, is it correct? Yes.
कैसे करेक्ट है, मेरे को एक्सप्लेन कीजिए तो। Shamun, can you explain me? Please explain it to me. Why this is correct? I am saying there is a mistake. Justify your answer. Why you are saying this is correct? Come on, बताओ। आप लोग चुप क्यों हो जाते हो? शामुन, समझ नहीं आया आपको? यू आर नॉट ऑडिबल। चलिए छोड़िए। So this is not correct. Okay, this is partially correct. ये पूरा correct नहीं है, मतलब this is incorrect. Why this is incorrect? Because have you heard about chain rule, Shambun? Just type yes or no. Yes. So if you know about chain rule, then why you are saying this is correct? According to chain rule, this is a composite function. So you have to derivate it one more time. ये आपको नहीं पता है? This is 4. Using this formula, आपके पास 4 into 2x plus 1 power 3 आ गया. Now you have to differentiate this 2x plus 1 also. Using chain rule, you have to differentiate this also, your composite function also. This will give you 2x plus 1 power 3, and differentiation of 2x plus 1 is 2. So this will give you 4 times 2, that is 8 times 2x plus 1 power 3. Now I hope you understood the chain rule, अगर आपको नहीं आता था तो, और अगर आपको आता था, so this is not good that you have forgotten about all the things जो भी आपको याद था इस चैप्टर में। चलिए, तो चेन रूल करा चुका हूं मैं आपको। Okay, if you have done with the chain rule, then do this question. And सबका आंसर आना चाहिए। I will ask each and every one. Done, sir. Okay, what's the answer? 2x into cos x square. 2x into cos of x square. सबका सही है?
ऑल राइट। ओके शामन। Now differentiate this function. In this you have to use quotient rule. आपको दिख रहा होगा। आंसर ओके। और इफ डन। अली आपका हुआ। शामबुन। यस सर। ठीक है। ओके अंजलि, कितना आंसर आ रहा है? A cos ax plus b cos cx plus d plus c sin cx plus d sin ax plus b divided by cos square cx plus d. ज्यादा ही अजीब आंसर आ रहा है। ए कॉस एक्स प्लस बी, जस्ट मैच योर आंसर डॉट secant cx plus d। ओके, secant cx plus d plus c sin ax plus b into tan cx plus d, then secant cx plus d. Is the answer is correct? Yes, sir. ओके, सबका ये आंसर आया था। यस सर। बाकी अभी करके देख सकते हो, यहाँ पे जैसे tan cx plus d है और secant cx plus d है, तो इसको 1 by cos लिख दोगे, इसको sin by cos लिख दोगे, है ना। उससे
कुछ नहीं होगा वैसे। हाँ, उससे उतना कुछ होगा नहीं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। Simplest form means this is the form in which you do not have you're not having any denominator ना। अदरवाइज अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस यू हैव टू यूज द चेन रूल आल्सो। इसमें आपको प्रोडक्ट रूल भी यूज करना था, यू ओवर वी रूल भी यूज करना था, एंड चेन रूल आल्सो। ओके, सो प्रोडक्ट एज वेल एज चेन रूल दोनों इसमें यूज होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। cos cube x sorry, cos x cube and sine square x power 5. Product rule, then chain rule. That's it. प्रोडक्ट रूल और चेन रूल इतना ही लगेगा, इसमें हो जाएगा। Answer. ओके, ऑलराइट। सबका हो गया? ओके, अंजलि ने बताइए क्या आंसर आ रहा 10 x raised to 4 into sine x raised to 5 into cos x raised to 5 into cos x raised to 3 minus
3x square sine x cube minus into sine square x raised to 5. 10x power 4 into sin x power 5 into cos x power 5 into cos x power cube. You said 10 somewhere. I know, sir. Please check your answers. The correct answer is 10 times x4 sin x5. इसको ना फॉर बेटर क्लियरिटी इट इज बेटर टू राइट इन अ ब्रैकेट जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो. cos x power 4, sorry 5, cos x power 5, then cos x power cube minus 3x square sin x cube sin x cube sin square into sin square x power 5. ये आंसर आ रहा है. किसी का डिफरेंट आया, किसी का कुछ, किसका सेम आया? सेम. अली इज गेटिंग द सेम आंसर. शामुन आपका क्या है? अंजलिना आपका कुछ कहीं पे 10 आया था. अच्छा शामुन I आपका didn't सेम get आया. अंजलिना I didn't get answer. यू आर गेटिंग 10. I didn't get answer. ओके ओके, सो दैट मीन योर आंसर इज आल्सो द सेम, है ना? Yes, sir. ओके, वन मोर थिंग कि कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़े से ज्यादा दिमाग लगाएंगे वो इसको x की पावर 8 लिख देंगे, है ना? तो उन सब चीजों से थोड़ा सा दूर रहिएगा. दिस इज नॉट इक्वल टू cos ऑफ x पावर 8. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना क्वेश्चन चाहता है उतना ही लगाना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा बिकॉज दिस फंक्शन इज नॉट लाइक cos. This power is not on the cos, it is only on your theta. Right. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कराऊंगा, फिर उसके बाद some questions, then exponential logarithmic function, log function. ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट क्लास तक ही खत्म हो पाएगा ये. ओके, एनीवे, बिकॉज आई वांट टू कंडक्ट अ क्विज. ठीक है, और वो क्विज थोड़ा सा लेंदी होगा. आधे घंटे तक का क्विज लूंगा मैं. दैट्स व्हाई आई वांट एवरीवन टू आंसर इन द क्लास. बिकॉज अगर आप क्विज में आंसर नहीं करोगे सो दैट्स योर लॉस. मतलब लॉस नहीं है इन द सेंस, बट फिर भी जिसको क्विज के बारे में पता है उसको पता है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेरिवेटिव ऑफ 2 अंडर रूट कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर.
Done, sir. ओके, ऑल ऑफ डन। Yes, sir. डन 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 डन। ओके, सो कितना आ रहा है आंसर अंजलिना? It's 2x cosec square x square divided by root of cot x square. ये आंसर किसी का है? सेम आंसर। अली गॉट द सेम आंसर। शामुन आपका क्या है? अंजलिना आपका सेम आया या फिर थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, या पूरा डिफरेंट है? I didn't simplify, sir. तो सिंपलीफाई नहीं किया आपने। देखिए, एक और चीज, जब भी आपके पास फंक्शन में आप ट्रिग्नोमेट्री होता है, सो इन ट्रिग्नोमेट्री द सिंपलेस्ट फॉर्म इज टू टेक योर आंसर टू साइन और कॉज। अगर आपके पास कहीं भी कॉट है या फिर टेन है या सीकेंट है कोसीकेंट है, सो आपको क्या करना है, आपको जो आपका आंसर है उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। एंड इन ट्रिग्नोमेट्री द सिंपलेस्ट फॉर्म इज टू राइट योर आंसर इन साइन एक्स और cos एक्स, और इन बोथ साइन एक्स cos एक्स। ओके, ठीक है। ऑल राइट। ओके, वही आएगा अगर आप करोगे तो। ठीक है। एनीवे एनीवे, जस्ट अ मिनट, let me take some questions from your previous year. Okay, Rolle's theorem is not a part of your syllabus, right? रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा है आपने या फिर आपको स्कूल में पढ़ाया गया? No, sir. अह, ठीक है।
to do this question. If this function is differentiable at x is equals to 1, then find the value of k. Similar to the continuity, सॉरी कंटिन्यूटी में क्या होता है, आपका एल एच एल आर एच एल इक्वल होता है. Answer. Is it continuous? Sorry, is it differentiable? Yes, sir. At what? So that's given in Equal. the question. Uh, We have to oh, find sorry. k. Differentiable at x is equals to 1. Okay, sorry. And at what value of k? 1/2. 1/2. ओके, ठीक है, ये 1/2 सही है. शाम 1/2. ओके शाम. अली आपका आ गया. राइट. यस. ओके. सो tell me the can you tell me the conditions for differentiability? What are the required necessary conditions for your function to be differentiable at any point, at any particular x, or at any point? किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने, हिंदी में नहीं आएगा वो. टेल मी द कंडीशंस फॉर डिफरेंशिएबिलिटी. हैव यू चेक्ड वेदर योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट? या फिर आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया और डायरेक्टली इक्वेट कर दिया? Checked, sir. है ना, डायरेक्टली किया. फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, राइट अली? सो अगर ये आप एग्जाम में बस डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, इक्वेटिंग बोथ द डेरिवेटिव्स, सो टीचर विल डिडक्ट, द चेकर विल डिडक्ट योर 2 मार्क्स. अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, नहीं सॉरी, अगर ये 5 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स से 5 मार्क्स में तो किसी एंगल से नहीं आएगा. 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा. वाई? बिकॉज द इम्पॉर्टेंट कंडीशंस for your function to be differentiable is are it must be continuous at that point. अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था that every
differentiable function is continuous at that point. Okay, and after checking whether it is continuous or not, then you have to move to this point, that your LHD is equals to RHD at x is equals to 1. राइट, किसने किसने मिस किया था ये वाला पॉइंट? शामवन, आपने किया था पॉइंट? अंजलिना, आपने किया था? Yes, sir. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट. मेंशन करने से कुछ नहीं होगा, आपको सॉल्व करके दिखाना है कि माय फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equals to 1. And how you will prove the continuity? By checking LHL and RHL, equating LHL and RHL. Okay, okay, so let's start with the new topic, that is derivative of implicit function. Implicit आपको पता क्या होता है? What do you mean by explicit and implicit? Implicit, explicit पता है आपको? नहीं पता? Yes, sir. ये आई थिंक मैंने पिछले बार भी बताया था आपको. अंजलिना, आपको पता है व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? Yes, sir. क्या होता है बताइए? It has two variables, x and y. जस्ट टू वेरिएबल्स. एंड एक्सप्लिसिट में One आपके पास variable. एक ही वेरिएबल के फॉर्म में होता है, लाइक y इज इक्वल्स टू एनी फंक्शन लाइक एफ एक्स 4x+3, है ना? शामवन, क्लियर हुआ आपको व्हाट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट? अली, आपको क्लियर हुआ? अली विल टाइप. यस सर. ओके, so this is explicit and implicit differentiation. In this explicit differentiation, explicit, you have you have a function in only one variable. Like यहाँ पे ये जो आपका y है, ये बस x वेरिएबल में है. But here your function is in two variables, x square plus y plus 3xy. So इस केस में in explicit differentiation you have to check in what respect you have to differentiate your function. वैसे तो आपको यहाँ भी चेक करना है, बट यहाँ पे इट इज ऑलरेडी मतलब अंडरस्टूड है. अगर आपका फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू डिफरेंशिएट इन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? y के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली जीरो आएगा ये. ओके, इट कैन बी जीरो और इट कैन बी dx/dy, अगर वो कांस्टेंट नहीं, अगर वो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो. सो हियर it is important to check in what respect you have to differentiate. Like in this function you have to differentiate with respect to dx. So dx के रिस्पेक्ट में ये x स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा, 2x आ जाएगा. y y कहाँ से आ गया? ओके, इसको कंबाइन कर दिया है, ठीक है. इसको डिफरेंशिएट किया है, टेकिंग 3y कॉमन with respect to x, it is coming out to be 3y, and then for this y. ओके, तो ये करने के बाद आपके पास ये वाला फंक्शन आ रहा है. अगर मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएट करना होता, if I have to differentiate this function with respect to y, so इस केस में आपके पास क्या होता? y के रिस्पेक्ट में, सो x स्क्वायर का क्या होता बताइए? 2x into dx by dy. 2x into dx/dy, and for the y it will be 1,
and for 3xy it will be using the product rule. 3x को मैं कॉमन निकालूंगा, y का हो जाएगा 1, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 1, एंड y को कॉमन निकालूंगा, y को कॉमन निकालूंगा एंड 3x का क्या हो जाएगा, 3y dx by dy. So this is implicit differentiation, and it is important to check with who in what respect you have to differentiate your function. ठीक है, so ये आपको इसका ध्यान रखना है. All right, now let's do some questions on implicit and x implicit function जिसका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा. इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन होगा that what you have to find, और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं. इससे आसान आपने क्वेश्चन देखा कहीं पे? नहीं देखा होगा पूरे बुक में. फाइंड dy by dx if y plus sin y is equals to cos x. बताइए इससे आसान क्या क्वेश्चन आएगा अब? वैसे एक मार्क्स में ही आएगा ये, और इट कैन बी इन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स में भी आ सकता है. Done, sir. ओके, बाकी लोग भी अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ाइए, बिकॉज जब आप एक्यूरेसी पे आपकी कमांड आ जाएगी तो उस टाइम पे स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, बट विदाउट लैगिंग योर एक्यूरेसी. ऑलराइट, कितना आ रहा है अंजलिना? Minus sin x divided by 1 plus cos y. माइनस साइन एक्स divided by 1 plus cos y. That's it. Done. Okay, Ali. शामन आपका हुआ? Yes, sir. अच्छा, सबका सेम आंसर है? किसी को कुछ ऐड ऑन करना है इसमें, इस आंसर में? Angelina, would you like to add something in your answer? Tell me. Taking the minus in the denominator. Taking minus in Negative. denominator. What kind of add-on is this? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में नेगेटिव हो या फिर न्यूमरेटर में नेगेटिव हो, जो फंक्शन इज नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कैसे ऐड ऑन? सी, जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन होता है, whenever you have any function in denominator,
and you know that denominator cannot be 0. आई नो दैट बहुत बच्चे के यहाँ पे मार्क्स कटते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने सॉल्यूशन सही किया है, एकदम एक्यूरेट किया है, एंड दे डिजर्व टू गेट 100 मार्क्स। बट बिलीव मी, जिसके 100 मार्क्स आने आ रहे होते हैं ना पेपर में, उसका पेपर कम से कम 3 4 5 बार चेक होता है, रीचेक भी होता है यहाँ तक। टीचर उनके पेपर में गलती ढूंढता है, नहीं होता है तब भी जानबूझ के कहीं ना कहीं से ढूंढेगा वो। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि उन लोग को मौका नहीं देना है कि गलती निकल जाए, बिकॉज आई नो मैनी स्टूडेंट डिजर्व 100 मार्क्स। ठीक है, तो बिकॉज मेहनत वैसे की हुई है ना आप लोगों ने भी, तो जब मेहनत होती है तो 100 मार्क्स डिजर्व करना तो बनता है। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स के पीछे नंबर कट जाते हैं तो बाद में आप ही को दुख होगा। इसीलिए टीचर को अलाउ नहीं करने के मार्क्स काटे। योर 1 + cos y cannot be equals to 0, because if it is 0 then your function is going to be not defined. So your cos y should not be equals to -1. -1. Cos y should not be equals to इसका क्या होता है? Cos 3 pi by 2. Cos 3 pi/2। राइट, ठीक है। नो, नॉट 3 pi/2। Cos pi. Cos. Cos 3 pi/2 तो 0 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ pi/2। Cos 3 pi। Cos 3 pi is -1। So why are you writing 3 pi? Pi लिख सकता हूँ मैं। What is cos pi? Angelina, what is cos pi? Cos pi is -1, Yes, sir. है ना? Cos 3 pi and 3 pi is equals to pi. Why? Because in trigonometry 3 pi को हम 2 pi plus pi लिख सकते हैं, and 2 pi is complete round, so no use of this, you can write pi. So आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इन ट्रिग्नोमेट्री, दैट इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं y इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे बिकॉज हेयर इट इज नॉट इक्वल साइन, सो यहाँ पे y इज नॉट इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस y। ये y कुछ और होगा वैसे, ये वाला y होता है, हालांकि सेम हो गया इसलिए इसको मान लो कुछ और। इसको आप कोई और y मान लो, छोटा y। सो दिस y इज इक्वल्स टू, y is not equals to 2n pi plus minus pi. Now you can remove pi. Y is not equals to pi times 2n plus minus 1। प्लस माइनस, आई थिंक प्लस माइनस नहीं होता है, माइनस साइन वाले केस में होता है जब -1 आता है, सो यू हैव ओनली प्लस साइन।
ये कितने लोग को पता था ये चीज? सो इन द लास्ट, ये सब आपको रफली करना है, बट यहाँ पे अगर आप शो करोगे तो इट इज नॉट, मतलब कि ऐसा नहीं है कि टीचर मार्क्स काट लेगा, बट आपको ये चीज जरूर शो करना है। दिस दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आपको आंसर के बाद में शो करना है। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस, यू हैव टू शो दैट योर y शुड नॉट बी इक्वल्स टू पाई इंटू 2 टाइम्स n+1, बिकॉज अगर ये होगा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बस इतने, इस लाइन की वजह से ना आपके यहाँ पे 3 में से 1 मार्क्स कट जाएगा। एंड हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। -1, अर्ली व्हाट -1? ओके ओके, अच्छा वो बता रहे थे cos 5। ओके ओके अली, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बातों का ध्यान रखना है। ओके, नाउ वी हैव अ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। सो इनवर्स फंक्शन का आपको डेरिवेटिव तो आता ही होगा वैसे, वैसे तो आप याद कर लोगे, बट अगर आपको नहीं आता है, सो व्हाट इज द प्रोसेस, बताता हूँ कैसे, क्या प्रोसेस है उसका। ये क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ होते रहता है। ओके, सो हियर यू fx इज, your function is sine inverse x. So instead of writing this fx, write y, sine inverse of x. Why I am saying this? Because आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है ना। You have to find the derivative of function. That means you have to find dy by dx. आपको ये निकालना है, ये अब इसका ध्यान याद रखिएगा। So what you will do, you will just take this sine inverse on the LHS. So it will become sine y is equals to x. Now you will differentiate. What is the differentiation of sine y? Cos y. And again differentiation of y. Why? Y. Why? Because using the chain rule you have to differentiate your y also. So y का differentiation होता है dy by dx, and here x का differentiation होता है 1 with respect to x. So यहाँ से आपका जो dy by dx है, that will be 1 over cos x, sorry, 1 over cos y, which is secant of y. And don't forget to put this back in your answer, because आपने ये सपोज किया है ना, y is equals to sin inverse of x. So ये आपको आंसर में रखना है लास्ट में, secant sin inverse of x. Is it okay? और ये पता है क्यों रखते हैं? why I am putting this in whatever I have considered, इसको मैं लास्ट में क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ? बिकॉज जो ये आपका फंक्शन होता है, द फंक्शन एफ एक्स, इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे ना, जब इसका dy बाई डी एक्स निकालोगे, डेरिवेटिव करोगे, सो इट इज लाइक दिस, है ना। इट इज स्टिल, इट इज इट विल रिमेन इन द वेरिएबल एक्स, दैट्स वाई इसको हम ऐसे रखते हैं, इसको लास्ट में पुट करते हैं। जहाँ पे छोड़ दोगे तो नंबर तो पता नहीं, पर नहीं काटने चाहिए, पर फिर भी
पुट कर दो तो ज़्यादा बेटर है. इज इट क्लियर how you are going to find the differentiation of any inverse trigonometric function? ये क्लियर है? Yes, sir. ओके आप लोगों ने वो भी याद किया होगा दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? Yes, sir. तो वो कहाँ से आता है? वो इसके ऊपर कंडीशंस लगती है, इस डिनोमिनेटर के ऊपर. यहाँ पे जो cos y है ना, इसको मैं secant y में ले गया. यहाँ पे जो cos y है इसके ऊपर कंडीशंस आती है बहुत सारी, दैट योर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू दिस. वहां से x की कुछ कुछ वैल्यूज आती है, उस रिस्पेक्ट में आपको जो लास्ट का आंसर आता है वो बनता है. ओके तो आपको ये वाला चार्ट याद रखना है. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस आ जाएगा, एंड tan का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट होता है, tan वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. एंड डोमेन डोमेन देख लेंगे, -1 to 1, -1 to 1, एंड इट्स डोमेन इज आर. ओके सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन. tan inverse sin inverse. ओके ओके डू दिस क्वेश्चन. Done, sir. ओके कितना आंसर? dy by dx is equal to 2 divided by 1 plus x square.
ओके, दिस इज करेक्ट। और किसी का आंसर ये? किसी का आंसर आया और? शामवन का यस सर आंसर। ओके, अली का भी आ गया। ठीक है अली। ओके ओके। ट्राई दिस क्वेश्चन। Done, sir. ओके, व्हाट्स आंसर? dy by dx is equal to ay minus x square divided by y square minus ax. सबका सही है? एवरीवन गॉट द आंसर? ओके अली। शामुन आपका है? ओके ओके। ओके अली। ओके शामुन। ऑलराइट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में आई विल also take questions from your NCERT examiner. Okay, NCERT examiner, and then we will do questions from your PYQ.
and then in the last 20 minutes I will conduct a quiz. ठीक है? And quiz के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन होगा. Your CBSE PYQ, your JEE main, JEE advanced, from everywhere. So be prepared. And have you got the syllabus for your upcoming test? Today is Monday. Tomorrow you have a test? Sir. Have you got the syllabus? Yes, sir. Okay. What's the syllabus? Determinants. Determinants. Okay. Okay then. All the best. And okay. कुछ डाउट है किसी को? No, sir. Okay. Uh, only okay. Okay then. Thank